ये एल्फ वाला वीडियो जो फुल फेस ऑफ एल्फ कॉस्मेटिक्स का मैंने किया था, कुछ था वो 4 साल पहले। सो उसके बाद आज निधि फिर से बैठी है। Very bad. Hey loves, what's up and welcome back to another makeup testing video. Finally I got my hand on the viral elf makeup products and इसमें से एक प्रोडक्ट तो ऐसा है जिसके बिना निधि का कोई मेकअप कंप्लीट नहीं होता। आई लव 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 इट, बट मुझे रियलाइज हुआ भाई साहब मैंने कभी बात ही नहीं किया उसके बारे में ऐसे बैठ के। सो इट actually deserves the video. So आज we will be talking about some new products, some viral products from the house of Elf, and we'll be talking about them. First impressions दूंगी because some are new in my collection. मैंने अभी लिया। I know I'm late, but better late than never. So let's try it out and see what the hype is about. So let's get started. तो सबसे पहले ना मैंने कुछ new products मंगवाए हैं। ओरिजिनली 4 साल पहले वाले वीडियो में मैंने ये प्राइमर बताया था विच इज फार रेव्ड अबाउट प्रोडक्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ एल्फ। इट इज दैट पटी प्राइमर एंड कुछ ऐसे पैकेजिंग में ये आता है। सो मैंने आप देख सकते हो बहुत सारा ये यूज किया था, बट नाउ सैडली 4 साल हो गए यार इस प्राइमर को। सो इट्स एक्सपायर्ड एंड सो आई डोंट यूज इट। कीप सेक के लिए आई हैव केप्ट इट, बट देन सेम प्राइमर आई फाउंड इन अ लिक्विड फॉर्मेट जो इनका न्यू लॉन्च था। सो आई थॉट let's go for it because I loved this primer on my skin. It did not break me out, so I thought the same putty primer in a liquid format और क्या ही चाहिए था. So I grabbed it like ASAP. It is the liquid poreless putty primer. So everyone's favorite is now in a silky weightless liquid hydrating formula that would give you a long lasting makeup grip, smooth finish and skin loving squalane. I love squalane. So that is the packaging of the primer. It would smoothen out your skin as well as blur down the pores. That is the primer available for 1300 rupees on Amazon as well. So let's try this one out. एंड मेरे पास इनका एक और प्राइमर है बाय द वे, सो वो भी हम ट्राई करेंगे. सो ये मैं ट्राई करूंगी सिर्फ ऑन वन साइड. ओके, सो दैट इज द प्राइमर ऑन एंड आई कैन डेफिनेटली से it is something like the putty primer in a liquid version, but that was something very different is what I remember. But ये भी खुद से बहुत अच्छा है. It just easily blended into my skin. It has a matte finish, बिल्कुल shiny नहीं है. You can see my skin is all matte with this primer and was very easy to spread out. So I really hope it does give me a smooth base. So that was that. It was very easy to blend, must say. So on the other side, I have a different primer. Is their viral primer. It's the Power Grip primer from Elf. Now, iska jo MRP hai, that is 1300 again. This too is something that they say is a gripping makeup primer that would lock in hydration. It is infused with hyaluronic acid in a gel-based primer, so it would not clog your pores and is perfect for makeup application. Now, I personally have this issue that बहुत सारे primers ऐसे होते हैं that clog my pores and immediately next day that I've used that primer मुझे fix breakout होगा. And so मैं बहुत choosy हूँ when it comes to primers. I'm loving the packaging of this one. It is very cute and sturdy. Now ये वाला एक power gripping primer है is what they say, which is gonna grip to your makeup and make your base flawless. Now the Elf Hydro Grip Primer is actually a great dupe of the Milk Hydro Primer. कुछ ऐसा आता है. So we don't have Milk makeup in India, but let's try this one. And इसका भी एक और dupe I have, which is from the Indian market. And इसका भी dupe is available in the Indian market from the house of Mars Cosmetics. It is their gripping primer. कुछ ऐसा इसका packaging है, and that is the packaging of the Elf one. Very similar. एंड मैंने ये वाला ट्राई किया है पिछले वीडियोस में, यू नो इट इज अ वेरी गुड परफॉर्मिंग प्राइमर. बहुत अच्छा ग्रिपिंग बेस देता है एंड जस्ट मेक्स योर मेकअप सो लॉन्ग लास्टिंग. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई आउट द सेकेंड लेवल वाला ओरिजिनल प्राइमर. सो लेट्स ट्राई दिस. यू कैन सी लिटरली लग रहा है जैसे मैंने एक जेली लगाई है. वाओ, you can literally see my skin looks as if मैंने कोई jelly लगाई है on the skin. I'm just waiting for it to dry a bit and then हम देखेंगे whether it turns tacky or not. हाँ जी, ये हो गया है sticky. That okay, the hype is real. ये side ये stick नहीं होगा. ये side you can see it is very very on the matte side जहाँ पर हमने use किया था the poreless liquid primer from Elf, and whereas on this side we've used the पावर ग्रिप प्राइमर जिसका भाई साहब मजा आ गया. सो यस, यू कैन डेफिनेटली feel the tackiness on the skin and it is not something जो ऐसा stretchy
या पुल फील होगा, बट इट इज नाइस एंड टैकी, सो डेफिनेटली इट इज गोना होल्ड ऑन एंड ग्रिप ऑन टू योर बेस सो दैट वो स्लिप एंड स्लाइड ना करे. तो स्पेशली अगर आपका ऑयली स्किन है, देन दिस इज द प्राइमर फॉर यू. आप आपके टी जोन में ही अप्लाई कर सकते हो, सो दैट यू नो योर बेस डज नॉट स्लिप एंड स्लाइड फ्रॉम योर नोज एरिया, बिकॉज वहां से सबसे ज्यादा फेड हो जाता है ऑयली स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले कैन रिलेट. अच्छा, सो दोस वर द टू प्राइमर्स, डेफिनेटली अ विन विन. दोनों अपने में ही बहुत सही वाले प्राइमर्स है. I loved both of them. दोनों primers are available at the price of 1300 rupees. While इसमें एक और variant available है. The original is the blue one and it comes like so 1300. And एक और variant है इसमें pink वाला, which you can grab as well. So ये भी 1300 rupees में available है. While the Mars one is for the fraction of its price. ये वाला जो Glow Clock Gel Primer है वो सिर्फ और सिर्फ 369 rupees में available है. So it's like a बचत, like a serious बचत. So yes, you can grab either or जो भी आपको पसंद है. Then coming to my favorite product, जिसके बिना मेरे makeup looks complete नहीं होते, and especially if it's a no makeup look, this is something that is gonna nail it. I'm talking about the ELF Halo Glow Liquid Filter. So good. Halo Glow Liquid Filter is actually a bang-on dupe of the Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter जो ऐसा पैकेजिंग में आता है. It's exactly the dupe of it, but for the fraction of its price. Charlotte Tilbury वाला तो भाई औकात से बाहर priced है. Like it's hell expensive to invest in a makeup product for me at least. So I tried this one. इसके अलावा मैंने कभी Charlotte Tilbury वाला hands-on practice किया ही नहीं है उस पर. I don't have an experience of it, but everybody raves this to be an exact dupe of it. So I thought, why not to try it? And from the day I've tried it, there is no going back. This product is actually so good. So मैंने उठाया है shade number 4, which is medium. इसमें अलग-अलग shades available है according to your skin tone. इसमें you can grab the filter for your skin. So basically it is like a stroke cream, but in a skin colored base, कुछ ऐसे समझिए. So it just meshes with your skin beautifully to add that glow without looking stark or unnatural on your skin. So it just merges into your skin tone, and that is why I really like it. Now the packaging is very cute. मैंने तो अपनी वाली तोड़ भी दी है. It comes with a big doe foot applicator like so. So all you have to do is just tap it on the high points of your face. It is very easy to blend even with the finger. You can see how flawlessly it blended into my skin, and you can see that glow, that radiance from within, as if मैंने बैठ के ना कितना सारा पानी पिया था. My skin just gets that healthy glowing look. I love it. बिल्कुल ऐसा ऑयली चिपचिपा ऑयली डोनट जैसा लुक नहीं है. इट गिव्स अ वेरी ब्यूटिफुल रेडियंस which I live for. And the best part is that आप कितना भी जूम करके देख लो, आप कितना भी मेरे करीब आकर देख लो, you would not see those specks of glitter, which I love. The formula actually does contain very finely milled shimmer dust or diamond dust is what is reflecting, and इतना fine है कि you cannot really make it out, and that is why I loved it. It's the perfect soft smooth radiance that you would ever wish for. Plus it is not even drying on the skin. It has a smooth finish, a smooth application. Elsewise बहुत सी बारी strobe creams they go dry, and उसके ऊपर when you layer your foundation it just cracks up and chips, तो वो अच्छा नहीं दिखता. While this has a very smooth clean finish because इसमें squalene और hyaluronic acid भी है. So I love this. This is available for 1750 rupees, and इसमें आप आपके skin tone के accordingly shades pick कर सकते हो. 1750 is the price of the Halo Liquid Filter from ELF. Now moving to the base products from ELF. तो मेरे पास पहले उनका कैमो कंसीलर था जो ओरिजिनल वाला है, which is this one right here, which is available for 899 rupees. But ये मुझे थोड़ा full coverage एकदम and थोड़ा drying लगता था because I do have a dry skin type. So I was waiting for them to launch their satin version, and वो भी उन्होंने लॉन्च किया, but mine is expired. तो मैं फेस पे आपको स्वॉच नहीं बताऊंगी, मैं हाथ पे आपको शेड स्वॉच बता देती हूँ because it's a beautiful match. तो ये है ELF का हाइड्रेटिंग satin camo concealer in the shade medium beige. So that's my shade, and ये 900 rupees में available है. It is this one right here. So 900 rupees में you can grab this. इसमें भी काफी सारे color options है.
so you can choose according to your skin tone. Now the thing is with their concealers, while you are choosing them, आप shade ऐसा लेना थोड़ा light 1 to 2 shades, because ये भयंकर oxidize होते हैं. So ऐसा मत shade लेना जो exact आपके skin tone जैसा हो, because oxidize होके वो और deep हो जाएगा. ठीक है? So that is the shade medium beige. You can see अभी एकदम light लगता है. मेरा हाथ तो टैंडी है, बट मेरे फेस के लिए भी दिस शेड इज लाइट, बट दिस विल ऑक्सीडाइज. हम इस वॉच को ऐसे ही रहने देंगे एंड आफ्टर सम टाइम वी विल चेक इट अगेन. दिस स्टफ हैज अ ब्यूटिफुल कवरेज, मीडियम टू फुल बिल्डेबल कवरेज है, प्लस इट इज वेरी स्मूथ ऑन द स्किन, hydrating है, it does give a satin finish, so it is not drying and neither does it pull on to the dry patches on my skin, especially during the winter time. So it's a perfect one to try अगर आपका भी dry skin है. So you can try this one out and मैं आपको दिखा दूंगी. So that is the swatch right now and हम इसे थोड़े टाइम ऐसे छोड़ देंगे and then we will swatch it again to see the shade difference. ये है swatch after it is dried out and oxidized. Now we will do a fresh swatch right besides it, so you can see the color difference. आप देख सकते हो it is so light yellow and ये ऐसा warm color हो गया है. So this does match my skin tone post it has oxidized. So that is like a major difference in the shade of the concealer, so you need to pick the shade accordingly. So that was the concealer, my base shade that I had in that. Uske baad another product from ELF which is a good one is this. It is the Camo CC cream. Again, the ELF Camo CC cream is a dupe of the viral It Cosmetics CC cream, जो कुछ ऐसे ही पैकेजिंग में आता है, very similar packaging, but again It Cosmetics यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. So I picked up the ELF one. ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था. I am the shade medium 330W, which stands for warm. So you can try this one out. They say you can use it as a moisturizer as well as a full coverage foundation depending on your need. Now they say it is color correcting. Full coverage would give you a natural finish and it is also infused with skincare ingredients like collagen, peptides and niacinamide. And that's not it. इसमें SPF भी है. So SPF of 30 भी added है, sunscreen. So you can just ditch your BB creams and switch to the CC cream instead. Inside आपको ऐसा pump पैकेजिंग मिलेगा जिसका स्वॉच मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ. ऑन द अदर हैंड ये भी ऑक्सीडाइज करता है, सो यू नीड टू पिक योर शेड अकॉर्डिंगली. सो दैट इज द शेड 330W from the CC cream. Literally taking itnusa, like एकदम एक pea size amount I am picking because I want a very light diffused coverage and not much. And to blend it, I have a new tool in the house from the house of Mars Cosmetics. It is their 4-in-1 travel brush. This is basically a multi-functional brush because आप बस एक brush के साथ travel कर लो, ये ज़्यादा space भी occupy नहीं करेगा, कुछ ऐसे आएगा. On one side you do get a flat top kabuki brush which is super soft. I love Mars brushes. And on the other side you get a tapered powder brush. So this you can use for blush as well as for powder products. So जो cream blushes वगैरह है उन्हें भी blend करने के लिए मैं ऐसा वाला tool use करती हूँ. And that's not it. You can simply twist to open up to two smaller brushes. One side is a small shader brush which you can use for eyeshadow as well as for blending, and दूसरा side खोलोगे तो you would get a nice fluffy blending brush to do your eyeshadow work. So it is so ergonomic design. While travel करते वक्त एकदम perfect हो जाता है, right? Because आपको ज़्यादा brushes के साथ तामझाम के साथ travel करना नहीं पड़ेगा. Just one brush and you're sorted. There you go. That is how the CC cream sits on my face. I love it, especially as a CC cream itself and not like a foundation. मैं बहुत सारा नहीं use करती. I just use the least amount of it possible because it is good on coverage. Okay, so coverage इसमें है, so एकदम इतना सा use करती हूँ and then I apply it all over my face and blend it, and you can see it just adds a very nice, beautiful, even tone and बहुत natural सा finish. It doesn't even look as if I'm wearing something on my face. Very effortless and chic looking. So I really like it. And the fact that इसमें sunscreen वगैरह भी है, but आपने आपका sunscreen use करना है. Do not rely on makeup infused with skincare for your skincare benefits. आपने अलग से आपका skincare करना है. And इस brush के बारे में तो कितने ही तारीफ करें, it is actually a very good brush to invest in. अभी it is available at a 24% discount. 500 rupees का ये available है. I would leave the link नीचे description में, you can check it out. And you can also purchase it from marscosmetics.com with my code NIDHI10 to avail extra 10% discount of your purchase on Mars Cosmetics. You can use my code as well. So that was the brush.
उसके बाद moving to the last product from ELF, which is the newest in my collection. It is their Halo Glow Contour Beauty Wand. Basically, they have a line of their blush as well as contour beauty wands. उसमें से मैंने blush वाला नहीं लिया because वो shimmer formula है and I'm not a fan of shimmer वाले blushes. मुझे matte चाहिए यार. I don't like shimmer blushes on me specifically, so I thought of trying out the contour beauty wand. That is the very cute packaging. इसमें मैंने shade जो लिया है वो है medium / tan. So that is the shade that I picked. MRP is 1150. 1150 is the MRP of this. Again, this is infused with 2% squalane, is what they say. So it is something which is hydrating on the skin, drying नहीं होगा for sure. That is the beauty wand from ELF. बहुत cute छोटी सी packaging है. ऐसा लग रहा है as if वो Milky Bar आता था ना, the chew वैसा सा छोटा सा baby pink. इसका पैकेजिंग है वेरी क्यूट एंड वेरी स्मॉल पेटीट पैकेजिंग. इसमें कुशन टिप एप्लीकेटर है ऑन द इनसाइड, सो व्हेन यू ओपन इट अप दैट इज द एप्लीकेटर दैट यू वुड गेट. से टू जेंटली स्क्वीज टू गेट द प्रोडक्ट आउट. सो दैट इज द शेड ऑफ द कॉन्टोर. लेट्स ट्राई इट. Oh, that's a smooth formula. So that is the shade. Definitely it's a nice warm color and you can see even the CC cream, it has warmed up. For my skin tone से ये oxidize करते हैं guys, so you need to pick your shade very carefully. So let's try this on the skin. Very Instagram style, so मैं एकदम कम use करूँगी because I don't want much of it. So just 2 dots maybe. या यहाँ पे 3 ले लेते चलो. The smallest one here. अच्छा, now let's blend and see ये कैसा है. I'm using this side of the brush to blend it in. बहुत time हो गया, we are not used to using contours, right? Wow, it blended effortlessly. मैं बस हल्के हल्के circular motions use कर रही हूँ and buffing it outwards into my hairline and it is blending very seamlessly. Whatever is left on the brush I'm taking along my hairline because already काफी tanned forehead है, so I don't really apply much of base product in the first go because लाइंस आ जाते हैं. सो मैं बहुत कम ही यूज करती हूँ, सो ब्लेंड करने की बात ही नहीं आ जाती. बस आंखों के अराउंड विथ व्हाटएवर इज लेफ्ट. कूल. सो दैट इज द ब्रॉन्जर ऑल ब्लेंडेड एंड अगेन लव्ड द फिनिश. इट इज समथिंग जो एकदम मैश हो गया है, ब्लेंड हो गया है, मेल्ट हो गया है मेरे स्किन में. यू कैन नॉट मेक इट आउट ऑन माई स्किन. इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इट इज समथिंग जो बहुत इजीली आपको एक नो मेकअप लुक देने में, अचीव करने में हेल्प करेगा. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट. I loved it. वरना बहुत सारे कंटूर होते हैं वो बहुत स्टार्क होते हैं एंड स्पेशली बहुत आर्टिफिशियल लगते हैं ऑन द स्किन. While this did not do so, it has a very nice warmth to it. It also did not turn muddy. वरना brown skin पे contours at times look muddy and grey, which looks so off. While this added a nice warmth, हल्का cool plus warm mix, ऐसा neutral tone है इसका. So I really liked it. The Halo Glow Beauty Wand is available in different shades, of which I picked a medium tan. And इसका प्राइस है 1150. I would have the link नीचे, you can check it out. So basically आप या तो ये contour वाले beauty wands ले सकते हो या इसमें 2 और types आते हैं. Like this is the contour beauty wand. इसके अलावा they also have the highlight and blush वाले beauty wands में blush का tint है plus shimmer flex है, while highlight वाले में proper liquid highlighter आपको मिलेगा ऐसे ही फॉर्मेट में. सो सारों का प्राइस सेम है 1150. सो यू कैन चेक इट आउट एंड आई रियली लाइक इट. लाइक Amazon पे सारे ELF के प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, सो यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम देयर. सो दैट वाज ऑल ऑफ माय फेस, एकदम नो मेकअप वाला लुक एंड जस्ट एडिंग माय फेवरेट एट द मोमेंट, द वेलवेट लिप टिंट फ्रॉम मार्स on my lips to complete the look. Start में भी वही था, just a bit more of it to complete the look. Yes, that is the final look. एकदम सुंदर, effortless and no makeup look है ये. So yes, that was all about testing new makeup from the house of ELF and I hope you guys enjoyed watching it. If you did, then hit the like button and do subscribe to join the trend fam. And any other video request, you can drop it to me in the comments down below and we shall meet soon in the next one. Till then, take care, namaste and keep trending.